Hello students, good evening. Put your attendance in the chat box. Japesh, Shlok, Priyal, who's remaining now? Bhavika, Bhalchandra. Yeah, everyone please put your attendance in the chat box. And today we are going to learn concepts from your mathematics subject. We have started chapter number 1 from your mathematics subject, right? And we have covered fair bit of portion as well. Okay. So yeah, it's Vivek, I guess. All right. So I think everybody has joined. So today we are just going to complete this chapter. Okay. Okay, Harsuk, welcome. Okay. So our topic is representation of rational numbers on the number line, right? So this was our topic that was pending. So today we are going to learn why this topic is important and why it is given here. All right. So you have learned to represent natural numbers, whole numbers, integers, and rational numbers on number line. So let us revise them. So first of all, we all know that natural numbers start from 1, 2, 3, and so on up to infinity, right? So if we have to plot the numbers on the number line, so what we will do is we will draw a line which do not ends on the right side. See, this arrow indicates that this line has not ended and it can be extended, right? तो इसको हम क्या करेंगे, equal parts में divide करेंगे. So 1 2 3 4 and so on up to infinity we can write. So this is basically number line and it is representing natural numbers. So if we add one more portion that, Oh, okay, hello. hello, Actually, voice is not audible, sir. okay, thank you for confirming. Is it audible now? Everyone please confirm that my voice is audible or not. नो, इट्स अगेन नो. जिसको सुनाई दे रहा है वो लोग यस टाइप कीजिए प्लीज, और जिसको नहीं सुनाई दे रहा है वो लोग नो टाइप कीजिए. सो आई आई कैन सी दैट श्लोक कैन लिसन टू माय वॉइस. जपेश कैन नॉट. Priyal can, yes. So Japesh, I guess you have some internet issue at your side, so that's why maybe you're facing the problem. Okay, so do one thing, just leave the meeting and rejoin. Okay, so that will help. एक बार मीटिंग लीव करो और फिर से एक बार ज्वाइन करो तो तुमको आवाज अच्छे से सुनाई देगा. ओके, ठीक है. सो सबको आवाज अच्छे से सुनाई दे रहा है, सो दैट वी कैन कंटिन्यू. ऑलराइट, सो द लाइन एक्सटेंड infinitely only to the right side of 1, so it cannot be extended to the left side of 1. It is like it is starting from 1 and it goes up to infinity. Similar case for whole numbers, it starts from 0 and it goes up to infinity, right? अभी integers की अगर हम बात करेंगे, so 0 will be at the center of this line. We cannot actually say this is a center, right? So we don't know right side or left side of the line, so we cannot say 0 is the center. But for sake of our convenience we will consider that 0 is the center, right? So 0 के right side में जो numbers रहेंगे वो रहेंगे positive numbers, और 0 के negative side में जो number रहेंगे those will be negative numbers. The line extends indefinitely on both sides. Do you see any numbers between -1 and 0 or 0 and 1? So obviously we cannot see any integers. Okay, so we are not discussing about numbers as of now. We are discussing about integers, so we cannot see any integer between -1 and 0 or 0 and 1, right? So when we talk about rational numbers, similar case, rational numbers में क्या है कि जो integers है वो तो आएंगे ही, लेकिन जो fractions रहते हैं like 1/2 और rational numbers, उनको भी हम number line पे represent करते हैं, right? So abhi jo point fourth hai, see the point on the number line 4, which is halfway between 0 and 1, has been labeled as 1/2. Also the first of the equally spaced points are that divides the distance between 0 and 1 into three equal parts can be labeled as 1/2, as on the number line 5. How would you label the second of these division points on number line 5? सो अभी देखो ये जो जीरो और वन के बीच को हमने कितने पोर्शंस किए, वी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स,
राइट। सो टू पार्ट्स होने की वजह से हमने क्या किया, सो दिस पार्ट विल बी कंसिडर्ड एज 1 out of 2. Yeah, Japesh, you want to say something? Am I audible now? Yes, sir. Okay, so if I'm audible, then our further communication will be in the chat box, right? Okay. Yeah. Okay. So जीरो से लेके वन के बीच में हमने दो पोर्शंस किए। दो पोर्शंस में जो जो फर्स्ट फर्स्ट पोर्शन है उसे हम कहेंगे 1 out of 2 पोर्शंस, यानी कि 1/2। और जो सेकंड वाला है वो है, वो भी 1/2 ही है, लेकिन फ्रॉम जीरो टू दिस डिस्टेंस इज 1। राइट। सो 1/2 को अगर हम डिवाइड करेंगे, जपेश यू हैव डाउट, यू कैन पुट इट ऑन द चैट बॉक्स। ओके। या। सो 1/2 का अगर हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करेंगे, सो वी विल गेट द वैल्यू एज 0.5। सो दिस इज वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पार्ट। देन अगर हम जीरो और वन के बीच में, जीरो और वन वन के बीच में जो डिस्टेंस है उसे अगर हम थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सो द फर्स्ट पार्ट रहेगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज 1/3। व्हाई वी हैव टू डिवाइड द गैप from 0 as 2, why we have to take step as by 2? Okay, so see, this is very simple, Japesh. Abhi 0, we are discussing rational numbers on number line. रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे किस तरीके से प्लॉट करना है या फिर किस तरीके से हमें उसे ढूंढना है। सो इसके लिए हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं कि 0 से 1 के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, और जो पहला पार्ट है उसे हम कहेंगे 1/2। ठीक है। अभी 1/2 होने के बाद में हम क्या करेंगे, इसी डिस्टेंस को, 0 से 1 के बीच में जो डिस्टेंस है उसे थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, थ्री इक्वल पार्ट्स में। ठीक है। सो पहला जो पार्ट रहेगा वो रहेगा 1/2। और यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क लिखा है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आंसर आएगा ये किसी ने लिखा भी है, श्लोक ने लिखा है, राइट। सो इट इज गोइंग टू बी 2/3, बिकॉज वाई, सी, दिस इज फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज सेकंड पार्ट, सो दैट कितने पार्ट्स हुए ये, 2 out of 3। राइट। सो दिस, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या नंबर आएगा, 2 out of 3 आएगा। अभी जपेश विल आस्क, सर व्हाई डू वी नीड टू डिवाइड बाय 3, अभी हमने 3 से क्यों डिवाइड किया। सो या, यू विल गेट योर आंसर in a minute. Okay, so let us suppose, now let me read this paragraph so that, yeah, next will be 3/3. So 3/3 is 1 only, right? 3/3 is 1 itself, so it is 1 written here, is it? 3/3 is nothing but 1. Yeah. So the point to be labeled is twice as far from and to the right of 0 as the point labeled 1/3. So it's twice, two times 1/3, that is 2/3. You can continue to label equally spaced points on number line in the same way. In this continuation, the next marking is 1. You can see that 1 is same as 3/3 as we discussed earlier, right? ठीक है। तो अभी ये हम डिवाइड कर क्यों रहे हैं, जपेश का जो क्वेश्चन था। सो सी, हियर इज द आंसर। नाउ यू हैव क्वेश्चन दैट ड्रॉ 7/3 ऑन द नंबर लाइन। अभी आपको एक क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया कि यू हैव टू फाइंड आउट वेयर शुड दिस नंबर लाई ऑन द नंबर लाइन, ये नंबर कहाँ पे रहेगा नंबर लाइन पे। ठीक है। सो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है स्टूडेंट्स, इट्स 3 इन द डिनोमिनेटर, राइट। सो डिनोमिनेटर में अगर 3 है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, we are going to divide, yeah, we are going to divide each number. now what each number, 0 से 1 के बीच है, या फिर 1 से 2 के बीच हुआ, या फिर 2 से 3 के बीच में जो भी डिस्टेंस है या फिर जो भी स्पेस है उसे हम इक्वल थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो इससे क्या होगा, देखो इससे क्या होगा, पहला जो था 0/3, 0 ही रहेगा। 1/3 मिला, 2/3 मिला, 3/3 तो 1 ही होता है, राइट। 4/3, 5/3, 6/3 2 होता है, 7/3, 8/3, 9/3 इज 3 itself and 10/3। तो हमें फाइंड आउट क्या करना था, वी हैड टू फाइंड आउट 7/3। सो वी गॉट द लोकेशन ऑफ 7/3 नंबर, right? Now if I ask you, okay, let me just tell, let me just take the next example, so it will be explanatory for you again. So we use number 1/8 टू नेम द फर्स्ट पॉइंट। सो अभी 1/8 हम क्यों कब यूज करेंगे, सो फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन आया, सर शैल आई
Sir, shall is how the answer. Your question is not clear, Japesh. Okay. Sir, show Japesh, your question is not clear. Okay. So मान लो you have to find a number on number line और आपको डिनोट करना है नंबर लाइन पे नंबर 5/8। अभी डिनोमिनेटर में क्या है स्टूडेंट्स? डिनोमिनेटर में 8 है। तो आप क्या करोगे? जीरो के बीच may I show the answer? Actually, I will give. See, since we have started, I guess this is our only fourth class, right? So जैसे जैसे हमारे classes बढ़ेंगे या फिर जैसे जैसे हम लोग ज़्यादा familiar होंगे, so what I will do is I will share a whiteboard with you, so everyone will be able to write on that whiteboard, whether you are joining from mobile or you are joining from computer, laptop, doesn't matter. Okay, so I'll be joining. Yeah, I cannot promise that, but uh, yeah, it is going to be continued for 365 days as well. Okay, so that is the different thing that we are not going to discuss here, but I'm going to discuss. Yeah, absolutely. If we are teaching you, we will conduct your exams as well. Okay, so Japesh, we are just like getting sidetracked from our subject, so we will focus on our subject itself, right? So for further discussions, we have parent meetings and all that, right? So in that meeting, we can discuss all those things. Okay, so where was I? I was talking about yeah, whiteboard, right? So what I will do is I will share whiteboard with you. तो उसमें क्या करना है? Whatever you will be writing, everyone will be able to see it. मतलब वो होता है ना कि स्कूल में जब टीचर्स आपको बुलाते हैं कि जपेश यू कम फॉरवर्ड एंड सॉल्व दिस एग्जांपल ऑन द ब्लैक बोर्ड। सो आप क्या करते हो? उस ब्लैक बोर्ड पे एग्जांपल सॉल्व करते हो एंड एवरीबडी इन योर क्लास इज एबल टू सी दैट। वो देख सकते हैं, राइट? सो उसी तरीके से आप यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करोगे एंड एवरीबडी विल बी एबल टू सी दिस, बट नॉट टुडे। वी विल गोइंग टू डू दैट सम अदर डे। ठीक है? सो या वी वर डिस्कसिंग दैट हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द नंबर 5/8। सो इस तरीके से 0 से 1 के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें, या दैट्स नॉट द थिंग जपेश, we will discuss that in the next class or maybe afterwards, right? So 5/8 को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Okay, now let us suppose you have to represent a number -7/4। अगर 7 -7/4 को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, so my first question will be, will this number lie between 0 and -1 or -1 to -2? कौन से नंबर के बीच में लाई करेगा? कौन से नंबर्स के बीच में ये रहेगा? सो दिस इज क्वेश्चन फॉर एवरीबडी। 0 से -1 के बीच में रहेगा या फिर -1 से -2 के बीच में रहेगा, या फिर कोई और आंसर है आपके पास? अभी ये नंबर समझ में आना हमको जरूरी है। 0 to -1, या श्लोक हैज गिवन आंसर दैट इट शुड बी बिटवीन -1 एंड -2। सो इट इज ऑब्वियस ना। सी 8/4 कितना होता है? 2 होता है। मतलब 8/4 जो है वो 7/4 से बड़ा है, राइट? सो 2 से तो हमारा जो नंबर है वो छोटा ही आएगा, लेकिन 4/4 से तो ये नंबर बड़ा है। दैट मीन्स ये नंबर 1 से छोटा है, -1 से छोटा है, -2 से, या -1 से बड़ा है, -2 से छोटा है, और इट इज वाइस वर्सा, राइट? नेगेटिव नंबर्स में थोड़ा सा वो कंफ्यूजन रहता ही है। सो या वी गॉट द कंसेप्ट कि हमें एग्जैक्टली वो नंबर ढूंढना कहाँ पे, राइट? सो so this is how you can represent number. Now write the rational numbers for each point labeled with a letter. So अभी आपको A जो पॉइंट है, A पॉइंट की जगह पे कौन सा नंबर आएगा? कोई बता पाएगा चैट बॉक्स में? What shall be the number in place of point A? If you can see this point, A की जगह पे क्या आएगा? B की जगह पे क्या आएगा? C की जगह पे क्या आएगा? You can write A is equal to 1/5. या A is equals to 1/5. ओके, B की जगह पे क्या आएगा स्टूडेंट्स? या B की जगह पे आएगा 4/5। वेरी गुड। C की जगह पे क्या आएगा? C की जगह पे हम दो नंबर्स लिख सकते हैं, 5/5 भी लिख सकते हैं एंड वी कैन राइट 1 एज वेल।
करेक्ट। डी की जगह पे क्या आएगा? व्हाट विल बी इन प्लेस ऑफ डी? Everybody is answering the question and I'm very happy about it. 8 by 5. D will be 8 by 5. E will be 9 by 5. राइट? और उसके बाद में जो नंबर है वो 10 by 5, जिसे हम 2 भी लिख सकते हैं। या वेरी गुड। ओके, नाउ फाइंड द नंबर इन प्लेस ऑफ f। यहाँ पे f की जगह पे क्या आएगा स्टूडेंट्स? इज इट -11/6? मैंने f की जगह पे पूछा है जपेश, j की जगह पे नहीं। j की जगह पे -11/6 आएगा, लेकिन f की जगह पे आएगा -2/6। Right, so very good. You are now able to locate any number on the number line. Right, are you confident? Can you locate any number on the number line? किस तरीके से locate करते हैं, समझ में आया? Okay, very good. अभी हम वो एक 0 से लेके 1 के बीच में जो डिस्टेंस है उसे 3 पार्ट में, 2 पार्ट में, 4 पार्ट में, 9 पार्ट में, 7 पार्ट में क्यों डिवाइड कर रहे थे, ये समझ में आया? If yes, then you will be able to you will be able to denote, or you will be able to locate any number on the number line. ठीक है? Rational number, any rational number on the number line. Okay, so we are done with this part. We will move to the next part, that is rational numbers between two rational numbers. So can you tell natural numbers between 1 and 5? Obviously you can tell, that is 2, 3 and 4. So these are the numbers. Sir, can we divide it also above 1k or not? Why or not? We can do that. Okay, we can do that. हम 0 से लेके 1 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको 1000 पार्ट्स में, 10,000 पार्ट्स में, 20,000 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नॉट एक्चुअली इन्फिनिटी, नॉट एक्चुअली इन्फिनिटी, बट अ वैलिड नंबर। ठीक है, इन्फिनिटी से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है। सो हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 7 and 9? Which natural number is there? 8 is there. 8 is there, not 2. How many natural numbers are there between 10 and 11? How many? 10 और 11 के बीच में नेचुरल नंबर्स कितने हैं स्टूडेंट्स? 0 नेचुरल नंबर्स है। ओके, whole numbers कितने हैं? How many whole numbers are there between 10 and 11? 0 again, right? Integers भी 0 ही है। Okay, so now my question is, how many rational numbers are there between 10 and 11? Rational numbers, I am talking about rational numbers. नेचुरल नंबर 0 है, whole नंबर 0 है, इनफाइनाइट सॉरी इंटीजर्स 0 है। ओके, somebody has answered that 11 rational numbers are there. Okay, somebody says infinite. Okay, again 11 again, Japesh says 11. Okay, let's see. ठीक है, हम देखते हैं। List the integers between -5 and 4. We can do that. It is very easy. How many integers are there between -1 and 1? How many integers are there, students? -1 और 1 के बीच में कितने इंटीजर्स है और उस इंटीजर की वैल्यू क्या है? -1 और 1 के बीच में how many integers are there and what is value of that integer, if I am audible to you? Yeah, so the first answer is there is only one integer and that integer's value is 0, right? 0 is the integer that lies between 1 and -1. Yeah, not n, it is 1. How many integers are there between -9 and -10? Obviously none. No integer is there between -9 and -10. So you will find a definite number of natural numbers, integers between two natural numbers or integers. Right? What is our conclusion of this observation? The conclusion is that there are definite number of natural numbers or integers between two natural numbers or integers, right? How many rational numbers are there between 3 by 10 and 7 by 10? Now it's again question for you students.
Okay, so Japesh says there are four. So which four should be there? Okay, okay. Somebody says three, right? So let us see. Let us check. Okay, so there are 4 by 3. Sorry, 4 by 10 is there. 5 by 10 is there. 6 by 10 is there. Right. So three numbers are there. Right? Is it correct answer? I think it is not. Who else think that this is not the correct answer? किसको लगता है कि ये जो आंसर हम निकाल रहे हैं कि इन दो नंबर्स के बीच तीन रैशनल नंबर्स है, ये आंसर गलत है? किस किस को लगता है? Anyone? Anyone? Anyone's there? I think it is correct. Okay. Japesh says it is correct. Anybody else? Okay. I take your silence as a no. मतलब बाकी जिन लोगों ने आंसर नहीं दिया है उनको लगता है कि ये आंसर इनकरेक्ट है. ठीक है. I assume that. So Japesh, now we will कंसिडर वाई आवर आंसर इज करेक्ट. ठीक है, तुम्हारा और मेरा जो आंसर हमने निकाला था ना कि तीन नंबर्स इनके बीच में रहेंगे, वो गलत क्यों है? सो सी जपेश, टेल मी और एवरीवन टेल मी, 3/10 को क्या मैं 30/100 लिख सकता हूं? यस और नो? कैन आई डू दैट? यस. ओके. जपेश, यस. ऑल राइट. नाउ 7/10 को मैं क्या लिखूंगा? 7/10 को मैं लिखूंगा 70/100. नो, सी हमें इन दोनों के बीच के नंबर्स फाइंड आउट करने थे, तो इन दोनों के बीच के नंबर्स और इन दोनों के बीच के नंबर्स भी तो सेम ही रहेंगे. राइट? सेम ही रहेंगे ना. अगर 3/10 इज इक्वल्स टू 30/100 है और 7/10 इज इक्वल्स टू 70/100 है, यू डेंट गेट इट, यू विल गेट इट. ठीक है, देखो 3/10 को मैंने लिखा 30/100, कुछ चेंज हुआ मीनिंग? 3/10 को मैंने क्या लिखा? 30/100, कुछ मीनिंग चेंज नहीं हुआ. 7/10 को मैंने लिखा 70/100, मीनिंग चेंज नहीं हुआ. सी वैल्यू इज सेम. अभी मुझे बताना 30/100 और 70/100 के बीच में कितने नंबर्स है? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 39. हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 40. ओके. सो ठीक है जपेश, मुझे एक नंबर बताना अभी. ओके, somebody says 39, somebody says 40. तो सी अभी मैं नंबर लिखता हूं 30/100. ठीक है, सॉरी 31/100. सो ये 31/100 जो नंबर है, ये 3/10 और 7/10 के बीच में आता है नहीं आता है? आता है नहीं आता है स्टूडेंट्स? यस और नो? यस. 31/100 जो है वो 3/10 और 7/10 के बीच में आता है. ओके. सो पहले हमने क्या अज्यूम किया था कि देयर आर ओनली थ्री नंबर्स. सी पहले हमने अज्यूम किया था इन दो नंबर्स के बीच में सिर्फ यही तीन नंबर्स है, तो ये तो मुझे चौथा मिल गया. अभी मैं पांचवा भी लिख सकता हूँ, छठा भी लिख सकता हूँ, सातवां भी लिख सकता हूँ. देयर आर मोर नंबर्स, मोर देन थ्री नंबर्स. ठीक है. 32/100 जो है वो भी इनके बीच में आता है, 33/100 वो भी इनके बीच में आता है, 44/100 वो भी आता है. राइट. अभी मैं आई विल टेक दिस टू द नेक्स्ट लेवल. कैसे? मेरा 30/100 था, सो मैं इस 30/100 को लिखता हूं 3000 there are how many zeros on 3000 let us suppose 10,000. Is it? मैं 3/10 को 3000/10,000 लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स. आई थिंक आई कैन राइट दिस. ठीक है. और 7/10 को भी लिख सकता हूँ 7000/10,000. तो इसके बीच में तो हजारों नंबर्स आ जाएंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो हमने जो पहले अज्यूम किया था, मैंने और जपेश ने, कि देयर आर ओनली थ्री नंबर्स, तो वो अजम्पशन गलत था. राइट? वो अजम्पशन गलत था. वी आर गेटिंग मोर एंड मोर एंड मोर नंबर्स. इट इज इनफाइनाइट, infinity. There are infinite numbers between any two rational numbers. So this is our conclusion. Right? So how many rational numbers are between -1 and -1/10 and 3/10?
It is again infinite numbers. Infinite numbers. Do you agree with me? Yes, no, maybe students. Yeah. So this is our conclusion. So see, we can expand this number and get more and more and more numbers. So you will find that you get countless rational numbers between any two given rational numbers. So this was our conclusion. We found that out. Right? We didn't read it somewhere. हमने कहीं पे पढ़ा नहीं यहाँ पे पढ़ने से पहले, लेकिन हमने ये फाइंड आउट किया. कैसे फाइंड आउट किया? वी टुक एग्जाम्पल, we experimented with that, and then we find out. ठीक है? So take example number 6. Write any three rational numbers between -2 and 3. I'm going to hide this question, or I'm going to show this question, but I need different number from every one of you. ठीक है? Write any three rational numbers between -2 and 0. स्क्रीन पे जो नंबर्स दिख रहे हैं उसके अलावा तीन नंबर्स लिखो. तीन नंबर्स एक ही चैट में लिखना है, अलग अलग नहीं लिखना है. ओके? पहला नंबर, उसके बाद में कॉमा, दूसरा नंबर, उसके बाद में कॉमा, एंड देन तीसरा नंबर. इस तरीके से तीन नंबर्स चैट में लिखो एवरीवन. राइट एनी थ्री रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 0. प्रीटी इट इजी इट इजंट इट? स्क्रीन पे भी दिया है. स्क्रीन पे तो हिंट भी दिया है कि कैसे फाइंड आउट करना है, क्या करना है. सिर्फ यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डोंट हैव टू कॉपी दिस नंबर. ओके, सो प्रियल ने लिखा है -21/100, -22/100, -30 23/100. Okay, Shlok has written 36/100, 68/1000, 274/1000. Okay, okay. और numbers? The question is not getting understood. Okay, you will understand this. So what if I say कि श्लोक के आंसर्स गलत है? Would you believe this? Shlok, just double check your numbers. Okay, you forgot to put negative sign. Okay, then your answers are correct. ठीक है? So students, 0 से लेके -2 के बीच में तीन नंबर्स आपको लिखने हैं. तो जो नंबर्स आएंगे वो पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव होंगे, ये पहली बात मुझे बताना. Those are going to be negative numbers. That is first thing. 0 से लेके -2 की तरफ जाना है, मतलब हमें नंबर लाइन पे कौन सी डायरेक्शन में जाना है स्टूडेंट्स? नंबर लाइन, देखो नंबर लाइन का जो पिक्चर है वो इमेजिन करो अपने नजरों के सामने, एंड डिसाइड कि आपको 0 से किस ओर जाना है. लेफ्ट में जाना है. राइट, यू हैव टू गो टू लेफ्ट. सो 0 से लेफ्ट में कौन से नंबर्स मिलते हैं स्टूडेंट्स हमें? पॉजिटिव मिलते हैं, नेगेटिव मिलते हैं? ऑब्वियसली नेगेटिव मिलते हैं. नेगेटिव ही मिलते हैं ना. या सो अगर 0 से -2 के बीच में जाना है, सो 0 से -2 के बीच में एक नंबर आता है, एक इंटीजर कौन सा आता है? विच इंटीजर इज दैट? -1. तो क्या मैं -1 को ऐसे लिख सकता हूं स्टूडेंट्स? -1 को ऐसे लिख सकता हूं मैं, -11/11. मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिखता हूँ. ठीक है? सो सी, -11/11 हुआ, -22/22 हुआ, -33/33, सॉरी, -33/33, -44/44. ये सबका क्या मीनिंग है? ये भी एक है, ये भी एक, 1 1 -1. सो हो गए मेरे तीन नंबर्स, -66/66.
इजंट इट? और जो बाकी स्टूडेंट्स ने नंबर लिखे, अभी बाकी स्टूडेंट्स ने क्या लॉजिक लगाया देखो, मेरा जो नंबर है वो 0 से 2 के बीच में है, मतलब 1 से तो छोटा ही है, या फिर 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, अभी तुम किसी का भी आंसर देखोगे, सो अभी यहाँ पे भाल चंद्र खुरपे, सॉरी इफ आई एम फॉरगेटिंग योर नाम, और अगर गलत तरीके से प्रोनाउंस कर रहा हो तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, -200/1000। तो -200 कहाँ पे है, न्यूमरेटर में है, और 1000 कहाँ पे, डिनोमिनेटर में। तो ये नंबर कैसा रहने वाला है, ये कैसा भी रहे, लेकिन इट इज गोइंग टू बी लेस देन 1, मतलब एक से छोटा वैल्यू आने वाला है उसका। राइट, तो आप कोई भी नंबर लिख दो, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं 1/1000, बट माइनस साइन देना पड़ेगा। सो ये भी नंबर 0 से लेके -2 के बीच में लाई करता है। डू यू एग्री विथ मी और नॉट? ये जो मैंने यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं स्क्रीन पे इतने सारे, 1 2 3 4 5, सो 5 नंबर्स, ये सही आंसर है कि नहीं, हमें सिर्फ 3 लिखना था, लेकिन वी रोट 5, सो दिस इज करेक्ट आंसर। नाउ यू गेट इट? ठीक है, वॉज इट सिंपल? इट्स वेरी सिंपल, इजंट इट? Okay, so find any 10 rational numbers between 5 by 6 and 5 by 8. Now, यहाँ पे 10 लिखने को बोला है. I will simplify this task for you and I will ask you to write only 2 numbers. Hint भी यहाँ पे दिया है कि करना क्या है. See, अभी आप लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो क्या करना होगा आपको, इनका डिनोमिनेटर इक्वलाइज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे इक्वलाइज करके दिया है, कैसे इक्वलाइज किया है, पहले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया, सो -5 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज -20 एंड 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 24। तो पहला जो नंबर हमारा था -5/6, सो दिस इज नथिंग बट दिस नंबर, मतलब हमने सिर्फ उसे अलग फॉर्म में लिखा है, लेकिन उसकी वैल्यू वही है, उसका मीनिंग चेंज नहीं हुआ है। राइट, सो हमने ऐसा क्यों लिखा, -5/6 को हमने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि वी वांटेड द डिनोमिनेटर टू बी इक्वल फॉर बोथ द नंबर्स। अभी सेकंड नंबर को हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 15, 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 24। तो यहाँ पे क्या हुआ, 24 24। नाउ इट्स इजी, राइट? तो अभी लिखो नंबर्स, दो नंबर्स लिखो यहाँ पे, 40/48, ओके, आई गॉट फर्स्ट नंबर, -40/48, सो -40/48 को हम लिख सकते हैं -20/24। तो नहीं, जो आपने लिखा है ना खुर पे, सो इट इज नॉट इनकरेक्ट आई वुड से, बट सेम ही तो है, -20/40, 24 लिखा क्या, और 40/48 लिखा क्या, वही नंबर है, हमें बीच का नंबर लिखना है ना। सो सी, डोंट मेक दिस मिस्टेक, ठीक है? अगर आपको 0 से लेके 2 के बीच का नंबर लिखना है, सो यू कैन नॉट इंक्लूड 0 and 2, उनको छोड़ना पड़ेगा तुमको, एंड या फिर छोड़ दो, उनके बीच का नंबर लिखने को बोला है तो उनके बीच का ही लिखो, राइट? सो 1/24, ओके, -14/24, ओके, -4/24, -10/24, -11/24, 3/24, -10/24, perfect. I'm getting lots of numbers. -6/24 is there again. सब लोग नेगेटिव भी लिखोगे, पॉजिटिव भी लिखो, 14/24, 13/24, is it? 12/24, there are a lot of, or why to write 12/24? I will write 121/240. Is it right or wrong? 121/240. 121/240, करेक्ट है गलत है? 122/240, राइट है, करेक्ट है, या? ओके, सो आई गेस यू आर गेटिंग द आइडिया। सो ट्राई टू राइट, जब भी तुम दो नंबर्स लिख रहे हो ना, सो मेक श्योर कि आप दो नंबर थोड़े से डिफरेंट लिखो, तो इससे क्या होगा, इट इज प्रैक्टिस फॉर यू, ठीक है? आसपास के लिखोगे तो उसमें कुछ सीखोगे नहीं। सो एक नंबर अगर 2 डिजिट का लिखा है, तो दूसरा नंबर 3 डिजिट का लिखने की कोशिश करो, 4 डिजिट का लिखने की कोशिश करो, वी कैन राइट इट ना, है कि नहीं? वी डोंट हैव एनी लिमिटेशन हियर,
So there is another method given here, but we don't need that. So find the rational numbers between 1 by 4 and 1 by 2. Now, so this is, I'm not going to show you any answers. I need this from you only. So इसको पहले इसका denominator equal करो and then tell me three numbers between them. यहाँ पे कितने बोला है? Find a rational number between them. Okay, एक बोला है लेकिन मैं तीन लिखना चाहिए मुझे. And write all three in one sentence itself. First number comma second sentence, sorry, second number comma third number. इस तरीके से. ठीक है. एंड ट्राई टू मेक, पहला नंबर अगर 2 डिजिट का है तो दूसरा नंबर 3 डिजिट का हो, तीसरा नंबर 4 डिजिट का हो, और तीनों के तीनों सेम ना हो. मतलब 1/10 लिख दिया, 100/1000 लिख दिया, 1000/10,000, सब तीनों नंबर तो एक ही है. ऐसा नहीं करना है. 1/4 एंड 1/2 ये दो नंबर है अपने पास. फर्स्ट ऑफ ऑल मेक देयर डिनोमिनेटर इक्वल. कैसे कर सकते हो? पहले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो. 20/20 24, सॉरी, पहले नंबर को अगर नहीं 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं आएगा. ओके. ओके, इज इट योर आंसर? ओके, 5/16, 6/16, 7/16. ओके, लेट मी चेक. अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो 4 बाय आएगा 16, 4/16, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से. या करेक्ट, रियल करेक्ट, करेक्ट, यू आर करेक्ट. 5/16, 6/16, 7/16 सही है. एनी अदर नंबर्स इसके अलावा कुछ? तीन अंक 3 डिजिट के कोई नंबर्स? 51/160. Okay, Shlok has written some different numbers. Very good. 5/8. Okay. 90/200. Okay. 42/200. Fine. Seems to be great. Bhavika. 600/400. No, I don't think that's correct. You know why? See, 600/400. तो ये नंबर एक से बड़ा रहेगा, छोटा रहेगा स्टूडेंट्स? दिस इज गोइंग टू बी लार्जर देन 1, राइट. बट हमारे जो दोनों नंबर्स है 1/4 भी और 1/2 भी, ये दोनों भी एक से छोटे हैं. सो हमारा जो बीच का नंबर आएगा दैट इज गोइंग टू बी लेस देन 1. नॉट नेसेसरी लेस देन 1, बट इट शुड बी between 1/4 and 1/2, right? So 600/400 is incorrect, I think so. Okay, so I think we have enough numbers, and those who have tried to solve the questions and given answers, I appreciate your efforts, right? So let me see just what is our portion remaining. Okay, example 9th, then exercise 1.2, and then that's it. We are going to wrap up this chapter. Okay, so students, we have solved question number 7, question number 8, question number 9 is for your homework. Keep your homework ready, but, or are we solving the question number 9 only? Find a rational number between 1/4. Find three rational numbers between 1/4 and 1/2. Now I will increase difficulty of this question. आपको homework में question दूंगा. So any three, लेकिन कितने? 4 digits में होने चाहिए. ठीक है. 4 digits rational numbers between 1/4 and 1/2. सो यही आपका होमवर्क रहेगा. कोई भी तीन नंबर्स ढूंढो जो कि 4 डिजिट्स के हो, मतलब उसका जो न्यूमरेटर है वो 4 डिजिट्स का होना चाहिए, डिनोमिनेटर नहीं. न्यूमरेटर शुड बी ऑफ 4 डिजिट्स. तो इस तरीके से आपको तीन नंबर्स आसानी से मिल जाएंगे. यू कैन फाइंड दैट आउट एज योर होमवर्क. ये हुआ, इसके बाद में अपना चैप्टर ही खत्म होता है. सो वी विल क्विकली रिवाइज. सी एक्सरसाइज 1.2 घर पर सॉल्व करने की कोशिश करो. इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, टेल मी इन द क्लास, वी विल डिस्कस दैट क्वेश्चन.
And this is our summary, what we have discussed in this chapter. So this is the summary of whatever we learned in this chapter. Please go through this as well. So with this, our chapter ends, and I'm planning to end today's lecture 5. Sir, can you tell once again for 4 digits? Okay. So this question is written in the question and answer pod, if everybody can see. So 4 डिजिट्स का कैसे नंबर लिखना है? तो मैंने क्या बोला, 1/4 और 1/2 के बीच में आपको नंबर फाइंड आउट करना है. सो डू वन थिंग, अगर 1/4 का डिनोमिनेटर तुमको 4 डिजिट का करना है, सो व्हाट यू विल डू, यू विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1000. कर दोगे? सो क्या होगा, 1000/4000 हो गया. 4 डिजिट का डिनोमिनेटर. 1000/4000, 1000/2000, राइट? सो इस तरीके से 4 डिजिट का नंबर हो गया आपका. यू कैन राइट एनी नंबर बिटवीन दैट. दैट्स इट. इज इट? ठीक है. सो स्टूडेंट्स, विद दिस our first chapter ends, and I will see you next Tuesday. Is it, or Wednesday? Yeah, it's Wednesday, I guess. Yeah. So I will see you on next Wednesday. Okay. So chalo students, do your homework and take care of yourself. Bye bye. Bye. You are free to leave the class. Today's class is ended. Bye. See you soon.